गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सब संगत को प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ इस पल के लिए जो गुरुजी ने हम सबको एक साथ बैठकर उनका सिमरन, उनका नाम लेने का अवसर दिया है। If I were to say that the most beautiful moment of my life till date has been the day I had his darshan, there could not be a bigger truth than this. और आज जब मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी, मुझे खुद वो सब पल बहुत याद आ रहे हैं जो मैंने गुरुजी के साथ बिताए हैं। I'm transported back in time to those blessed moments that I have enjoyed in the Sangat, soaking in his grace at Empire Estate. And आज भी जब मन बहुत विचलित हो जाता है तो जहां कहीं भी हो अपनी आंखें बंद करके उन पलों को याद कर लेते हैं, बहुत सुकून और राहत मिलती है। I will like to begin from the very beginning. I think that's the best way to begin. My father's family follows the Arya Samaj. So when I got married, my husband would ask me to come to the temple with him. I would go, but I could not relate because I had grown up following that Om प्रभु का नाम है और वो सर्वव्यापी हर कण में है। आपको मंदिरों में जाकर उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे मुश्किल लगता था, मंदिर में समझ नहीं आती थी। And when it was time, my time, our time with Guruji, and we got the call. So we went to Guruji and I will be very honest with you. I bowed at his feet. That was the most blessed moment of my life. प्रभु के चरणों में नतमस्तक हुई जब मैं, मेरी जन्मों की प्यास, इस रूह को जन्मों से जो प्यास थी वो मिट गई। पर ज्यादा कुछ मुझे समझ नहीं आया। उस वक्त भी आर्य समाज के जो आइडियल्स हैं वो मन में कहीं ना कहीं बहुत हावी थे। मैं नहीं समझ पा रही थी, बट एट द सेम टाइम मंदिर में जाना, गुरुजी के चरणों में बैठकर सत्संग सुनना, शब्द कीर्तन सुनना बहुत बहुत अच्छा लगता था। It went on for some time, and the reason of our going to Guruji was my daughter. She is the one. She was the guide. She was the force, I would say. She has a medical condition, and उस वक्त मन बहुत ज्यादा विचलित, बहुत ज्यादा परेशान रहता था हर पल, बिकॉज प्रॉब्लम तब शुरू ही हुई थी। आई एम टॉकिंग ऑफ 2006। प्रॉब्लम तब शुरू ही हुई थी एंड हर वक्त बस एक ही ध्यान लगा रहता था कि कैसे ये ठीक हो जाए। तो जहां भी कोई भी बताता था जाने के लिए, वी वुड गो। गुरुजी के पास बहुत मन में विश्वास लेकर के हम लोग पहुंचे थे एंड गुरुजी ने एक बार मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं माथा टेक कर वापस जाने के लिए मुड़ी तो ही कॉल्ड मी। आई टोल्ड हिम ऑफ हर प्रॉब्लम, आई शेयर्ड विद हिम एंड जैसा उन्होंने आदेश दिया वैसा हमने किया।
here I would like to tell you that till date, the medical condition is the same. The problem is the same. But there has been such a big change just coming into His grace. I should not be saying just coming into His grace, coming to Guruji. There has been such a big change that from a mother who was always worried, who was always preoccupied, and who could think of nothing but the well-being of her child, to a mother who is absolutely at peace. This is what has been blessed by Guruji. The problem, the condition, everything remains the same. But at the same time, there have been endless incidents where He has made it evident to us कि वो हम सब की इस जग के रखवाले हैं वो, और सबकी डोरी उन्हीं के हाथ में है, रखने वाले, बचाने वाले, हर मुश्किल से पार लगाने वाले गुरुजी महाराज ही हैं. बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं और हर एक इंस्टेंस के बाद मेरा फेथ बहुत दृढ़ हुआ है कि इनके हाथों में सब कुछ है. And now I say that the one who has blessed me with this child is the one who's going to see her through in this lifetime, and I do not know how many lifetimes to come, as many as are there. My husband has served in the Indian Air Force. So once we were visiting a friend who is working in the Indian Army. So the moment the car entered the gates of the bungalow, I was simply awestruck. The reason was the sprawling lawns. But the next moment, I was rather disturbed to see that the lawns were absolutely bereft of all grass, all green, all flowers. And I just said to myself, I did not speak it out aloud, I just said to myself, Guruji, अगर ये लॉन मेरे पास होता तो मैं इसको फूलों से भर देती. But I didn't go beyond. I said मेरे पास होता because as an Air Force officer's wife, I knew my husband was not entitled to an accommodation in that area. That was meant only for the army people, army officers. So that was about it. A few months later, my husband told me that we have been posted out, that he's been posted out. So my first question was where? Because posting in the defense environment is quite an upheaval for the family. Everything goes topsy-turvy and you have to pack your bags and move. So I was disturbed, kya hoga, kahan jana hai? And the very next moment he said that I've been posted to a unit in Delhi. And then he told me that this was a unit which is the only tri-service unit in the defense environment in India. And he had been given command of that unit. And soon we were house hunting because with this new posting, we were to move to a new accommodation. And my joy knew no bounds when when we were offered an accommodation in Baird Place. It was the same area where my friend lived. So, जो बात कही भी नहीं थी, जो व्यक्त भी नहीं की थी, जो अधूरी छोड़ दी थी, वो प्रार्थना उनको कबूल हो गई. And Guruji blessed me 3.5 years in that house. Bless me if I say I'm absolutely wrong. He blessed so many, all those whom he wanted to in that environment.
And here I would like to tell you that this posting was again due to the medical condition in the family, and my husband might sometime have spoken to his seniors about it. So we thought that this is because of that, and we were given to understand that he would be there only for 1 year. But this went on for 3.5 years, and he got to serve in Delhi for 7 years at a stretch, which is again not possible. So this is his grace, which we now, whenever we sit down, recollect, talk about, we realize how immense, how unending it is. So we moved into this house, and now was the next challenge. This lawn had grass almost as tall as me, and it was in a real bad state. जब गुरुजी कराते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता. Within a very short time, a gardener came to us. I would like to tell you, till date, is working in the Prime Minister's estate. He's in government service. He needed an accommodation, so he came looking for one in our house. और उनसे बात करके मैं तो बहुत खुश हो गई, बिकॉज उनकी नॉलेज was so immense के मुझे तो लगा कि बस ये तो गुरुजी ने मेरे लिए ही इनको यहाँ भेजा है. अगेन मेरी बेवकूफी थी. It was to be revealed to me in times to come. And sure enough, it was not just that gardener, Mr. Yadavji, who was working. There were so many from the unit, my husband's unit, who used to work in the lawns. The lawns were so big that one could, at one point in time, we could easily have a get together of about maybe 800 to 1,000 people. So इतना बड़ा वो लॉन्स में काम करते हुए उनको मैं देखती थी, और हर दिन उनके पास जाकर के बोलना फूल कब आएंगे. बच्चा जैसे पूछता है, I would forget my age and then go up to him. And very often in the lawn in the morning when I would be talking to those flowers, taking Guruji's name. And with every passing day, I could see the change over there. और उस घर में सुबह हर रोज जब मंदिर में पूजा के लिए फूल लेने के लिए हम लॉन में जाते थे, वापस जब मुड़ते थे तो घर में मंदिर के छत पर एक मोर बैठा होता था, और many a time वो मोर अपने पंख फैलाए झूम रहा होता था गुरुजी की उस्तत में तैयार. These blissful moments are so deeply embedded in memory, and we rejoice every time we remember them. इस वक्त मुझे एक बहुत प्यारी संगत के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना है. He is a scientist. He has served as a scientist. He is an IITian from Delhi University, from Delhi, IIT Delhi. And उनके पास गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को किसी ऑफिशियल काम के लिए भेजा था. He went there, met him. वो काम तो शायद हुआ नहीं, but my husband and this gentleman, they spoke to each other, shared had a sharing over a cup of tea.
एक दूसरे से बात करी. And when my husband came back home, he spoke very highly about this gentleman and told me that the lady is in real pain. उनको बहुत तकलीफ है और वो कुछ भी खा नहीं सकती, खाने पीने में उनको बहुत तकलीफ होती है. So immediately I told him, आपने उनसे गुरुजी के बारे में बोलना चाहिए था, आपने उनसे गुरुजी की बात की. He says नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ. And they reside in Noida. So a few days later he tells me that there is a satsang in Noida. गुरुजी ने एकदम मेरे को याद दिलाया about this lady whom my husband had spoken to me about. And I told him, please call up this family, call up this gentleman and tell him to attend the satsang. And वो मेरा उसमें कुछ भी नहीं था, वो गुरुजी की कॉल थी. This gentleman came, he enjoyed the satsang and जब वो जाने लगे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी वाइफ के लिए प्रसाद ले जाइए. उन्होंने गुरुजी का प्रसाद अपनी वाइफ को दिया. शी हैड इट. एंड गुरुजी की कॉल जब होती है तो कोई रुक नहीं पाता. दे स्टार्टेड कमिंग टू द मंदिर एंड वेरी सून things started changing for them, for the lady. And as best as I know, as best as I understand, मंदिर आके गुरुजी के चरणों में माथा टेक कर लंगर खाती रही. और वो जो उनकी तकलीफ डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी या समझ आ रही थी जिसके बारे में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, she has recovered and she has been enjoying his grace, celebrating in his grace, and today the entire family is so in love with Guruji कि उनके पास बैठकर गुरुजी का नाम लेकर ही आनंद आ जाता है. This gentleman himself has a severe heart condition. बहुत सारे challenges आते हैं. जब कभी उनसे बात करो, बहुत प्यार में गुरुजी का नाम लेकर कहते हैं that he is seeing me through and he will see me through. And no fear of the imminent, no fear of whatever in this word we most dread. He is forever in love with Guruji, taking his name and living in his grace. मैं आपसे उस लॉन में हुए सत्संग के बारे में, जो जिस घर में मैंने हर पल बहुत तरीकों में गुरुजी की ग्रेस को एंजॉय किया है, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. फर्स्ट सत्संग जो हुआ था उस घर में was planned for 1st of September 2010. उस सत्संग में, और सत्संग था, पहला सत्संग था. घर में हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड, बहुत उल्लास के साथ तैयारियों में लगे हुए थे, भाग दौड़ कर रहे थे, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे. And around 3 o'clock, when I came out of the house, I was absolutely taken aback. We had planned to have the satsang in the lawns of the house, and I was very disturbed to see कि घने बादल छा गए थे आकाश में और it had started raining. We all sat down for a moment. We didn't have more than a few moments because बहुत सारी तैयारी करनी थी. So we sat down for a moment and just prayed to him, Guruji, please संभाल लेना, सत्संग लॉन में करना है, मन है आपका ये जो आशीर्वाद है, we wanted to share with the Sangat. So please let it be. आप देख लेना गुरुजी. बस ये कह करके अपने काम में लग गए. और from time to time my husband was receiving calls from the Sangat all over Delhi and NCR के asking सत्संग हो रहा है. Some even asked सत्संग अंदर है, सत्संग घर के बाहर है. And everybody said that it is pouring cats and dogs.
but हम अपना लगे रहे, करते रहे. My husband then came and told me that we should make some alternate arrangement. अंदर तैयारी कर लेते हैं. संगत जी, we were expecting around 300 to 400 people in the house. So he said, एकदम से in the nick of time बहुत मुश्किल हो जाएगा. We still have a couple of hours. Let us do something. But at that point in time, I was reminded about a sharing that I had with one beautiful soul who is Guruji Sangat. I call him my teacher. गुरुजी के पास आकर जब मैं कहीं पहुंच नहीं पा रही थी, I hope I am able to convey to you, where Guruji sent this teacher my way, and he taught us, he taught us to love Guruji, to be with him and to rise in our love for him. And उनकी कही एक बात उस वक्त मुझे याद आई कि जब गुरुजी का नाम लेकर के आपने कदम आगे बढ़ाया है तो फिर कदम पीछे खींचना नहीं. If you keep walking, he will see you through. But if you retrace your steps, then he will leave you, for you do not have the faith. Then he will leave you and leave you to do it on your own. This was the only thing that had kept me rooted, that no, we are not going to make any alternative arrangements. And sure enough, Guruji did see us through. The satsang was so beautifully conducted in his grace. Everything was perfect. पंखे, पेडेस्टल फैंस जो सब वहां लगाए गए थे, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी. The weather was so fine, so pleasant. And as they say, मैंने बाद में बहुत संगत से सुना है कि गुरुजी जब आते हैं तो उससे पहले there is a shower. Those were the showers that we had in the house that day. और कितना आनंद सबको आया. आज भी बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं that my husband is retired, संगत जब भी मिलती है कई बार बोलते हैं, आंटी अब आप दिल्ली कैंट में जब सत्संग होता है तो बुलाते क्यों नहीं है, आप हमें भूल जाते हैं, प्लीज मैसेज भेज दिया कीजिए. So I tell them that we no longer reside there. And ऐसे ही जब एक सत्संग और प्लान किया, संगत में ही कुछ लोग आकर के हमारे साथ, they were helping us decide कहाँ पर लॉन में कैसे सब अरेंजमेंट्स होंगे. तो we all saw घर में जो पोर्च है, पोर्च के ऊपर एक मोर आगे पीछे नाच रहा था, झूम रहा था इस खुशी में जिसका उसे आभास था. गुरुजी एक बार फिर सारी संगत को लेकर घर में आने वाले हैं. और उस घर में फूलों के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं. इतने फूल, इतनी तरह के फूल. मेरी जन्मों की प्यास जो फूलों के लिए थी वो पूरी की गुरुजी ने. इतने खूबसूरत फूल. और the vegetable garden, there were so many vegetables that one time we even were blessed to take some to the mandir, and मंदिर में लंगर में वो सर्व हुआ उस दिन. ये सब हमने बहुत एंजॉय किया उस घर में गुरुजी के साथ. और गुरुजी के बनाए संबंध हमने बहुत बार सुना है. गुरुजी से कि जो मैं बनाया है वो असली तोड़ा परिवार है. I have seen it happen, not once but many times. गुरुजी की संगत में एक आंटी हैं, बहुत प्यार से मिलती थी हमेशा मंदिर में. उनके बच्चे
उनके बच्चों के साथ भी जय गुरुजी एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे को देखकर स्माइल करना. वी यूज्ड टू मीट व्हेनेवर इट, बहुत अच्छे से संगत में जैसे हमेशा मिलते हैं. और जब गुरुजी के जब गुरुजी कुछ कराते हैं, so the whole everything falls into place. So one time she spoke to my husband. उन्होंने बताया कि उनकी बिटिया की शादी है. So हमारे घर के पास there's an Air Force mess. She wanted to go and see. She wanted to visit that place. So my husband went along with her. वहां जाकर जब वो लोग वापस आए घर, तो उनकी बातें, उनसे बात करके, उनकी बातें सुनकर मन में कुछ इच्छा हुई. बट आई डिड नॉट शेयर विद हर बिकॉज आई वांटेड टू फर्स्ट आस्क माय हस्बैंड. So I just spoke to him after they left that can we please tell them if they want they can have whichever function, one function, जो भी वो चाहे हमारे घर में कर लेने के लिए. So he says, हाँ, why not? You can definitely speak to her. So in the evening I called her up and I spoke to her and बहुत हेजिटेट करते हुए मैंने उनसे बोला कि आंटी अगर आपको ठीक लगे तो घर में आप जो भी चाहें बिटिया की शादी का फंक्शन आप देख लीजिएगा. वो और फिर उसके बाद she was she didn't commit anything or she didn't say anything, but then what came out from me the next was that हमें क्या पता गुरुजी ने हमें ये घर बिटिया के लिए दिया है. So this struck a chord and she, as best as I understand, was reminded of something Guruji had told this young woman जिसकी शादी की बात हो रही थी. So she agreed and फिर उसके बाद उनका घर पे आना शुरू हुआ. बिटिया उनके साथ घर पे आने लगी और हमारे घर में जो भी सत्संग हुए हैं उन सत्संग में, हर एक सत्संग में वो हमसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर के उन्होंने सेवा की और इतने प्यार से सब करवाया है that I have no words. So they started coming home and we started planning for the wedding. और उस लड़की की शादी में, उस बच्ची की शादी में हर एक पल हमने गुरुजी के आशीर्वाद को फील किया है. On the day of the wedding, there came a time when she was really not, she was not in a state to come out for the फेरास. बहुत ज्यादा problematic situation थी, but उनकी करी हुई setting ऐसी थी that there was a doctor at hand. The medical facility was right across the road. My husband just had to speak to them and the doctor with all the paraphernalia came in, did whatever was required and बहुत खूबसूरती से हर काम हुआ और हर एक पल गुरुजी ने एहसास कराया और reiterate किया that it is he who has got it all done. And today that child is beautifully married, happily enjoying her life, married life. And इतना खूबसूरत है उसके साथ बनाया संबंध क्योंकि वो गुरुजी का बनाया है, that उसका फोन आता है तो हम सबके चेहरों पर एक स्माइल आ जाती है. And there is never a moment that there is never a time that whenever she comes visiting, whenever she comes to Delhi, we have to meet, we have to remember, recollect all the beautiful moments that we have enjoyed in Guruji's grace. मैंने जब यादव जी हमारे घर से एज अ गार्डनर काम करने आए थे
मैंने सोचा था that he has come for me, but गुरुजी के आदेश से उनका आना हुआ था। गुरुजी का आशीर्वाद उनके लिए कितना उन्होंने पाया। आज भी जब वो बात करते हैं तो उनका गला भर आता है। His daughter, once कुछ काम था तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज इसको देख लीजिए। He with folded hands told me that I will not be able to do it today, क्योंकि मेरे को उन्होंने बोला कि मुझे आज गंगाराम हॉस्पिटल जाना है। So I was a little worried. I asked him क्या हो गया? He says मेरी बिटिया हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसको उसकी सर्जरी होनी है आज। So I asked him किस लिए? He told me कि उसका यूट्रस रिमूव होना है, उसके यूट्रस में ट्यूमर है। एंड देन ही सेड कि 15-16 साल की बच्ची है, कौन उससे शादी करेगा? बहुत मन परेशान है। तो बस मन में गुरुजी का ध्यान आया और मैंने उनसे कहा कि आप गुरुजी के चरणों में माथा टेक करके हॉस्पिटल जाइए। He came, he bowed at his feet and went to the hospital. 2-3 दिन के बाद मैंने जब उनको लॉन में काम करते देखा, so I just rushed to him and asked about the well-being of that girl. He says कि मैं आपको क्या बताऊं मैडम, सर्जरी तो हुई नहीं। I was amazed because he says कि मेरे से तो बोला था उन्होंने कि मैं सर्जरी है इसलिए जा रहा हूँ। So he says that जब उनकी बेटी को when she was being wheeled into the operation theater, the doctor suddenly turned and said इसका एक अल्ट्रासाउंड और कर लेते हैं। And he had told me कि उससे पहले उसका अल्ट्रासाउंड, MRI, everything, all the procedures required to ascertain the problem had been carried out. So, and Gangaram is one of the best hospitals in Delhi. So he says मैं बहुत हैरान हो गया। डॉक्टर उसको ले गए एक अल्ट्रासाउंड किया करने के लिए, और जब बाहर आए तो कहते हैं कि इसको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, wheel her back into the ward. So he was very disturbed. He had an argument with the doctor. The doctor बहुत प्यार से उन्होंने उनको समझाया कि योर चाइल्ड इज एब्सोल्युटली फाइन और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो जो टेस्ट हुए थे आपने कहा था दैट शी हैज दिस प्रॉब्लम। टू विच द डॉक्टर सेड ये कुदरत का करिश्मा है। एंड ये गुरुजी का उनको आशीर्वाद मिला। दैट चाइल्ड is absolutely hale and hearted. For 1 year, she had been having very excruciating stomach ache at times, and it had gone on for the entire year, due to which they had got her to Delhi to carry out all these tests. And गुरुजी के चरणों में माथा टेक करके अपनी प्रार्थना उनके चरणों में रख करके वो गए। And that child till date has never had any problem at all, no stomach ache, no nothing. And abhi a couple of years ago he had come home मिठाई लेकर के, और वो मिठाई लाए थे क्योंकि उनकी बिटिया की शादी हुई थी। उस दिन भी उन्होंने बताया that she is absolutely hale and hearty without any problem. His sons, both of them today, are working in the Indian Air Force. Nothing that my husband could have done. Purely, truly a blessing from Guruji. It had come as such a shock to us, the way the two inductions into the Air Force had happened. Only Guruji can do this. तो हर एक जो जीव है उसका ध्यान वो करते हैं। We had a driver
Once when I was traveling with him, he told me that my wife, she's expecting, और डॉक्टर ने बोला है कि उसके जो फीटस है उसके ब्रेन में देयर इज अ ग्रोथ. सो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैडम, एंड ही वाज वेरी हैप्पी दैट डे. सो ही देन टोल्ड मी कि एक दिन पहले उसका जब अल्ट्रासाउंड दोबारा हुआ, it took a long time, and the lady, she came out to tell him कि कुछ भी नहीं है, the child, the fetus is absolutely fine. And he says पूरा टाइम मैडम मैं बाहर गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में लेकर के बस उनका नाम ले रहा था, बस उनका नाम ले रहा था, पर नाम उनका ले रहा था. So he made it sure that everything goes on well, and that person was blessed with a very healthy baby boy, absolutely hale and hearty. Here, I would like to also tell you about something that I was going through. I was having severe pain in my elbow for over a month. It was getting worse with every passing day. And I remember it was a Saturday. In fact, I even remember the date. It was 13th of October. And I told my husband that now I'll have to visit a doctor. This is really bad. Saturdays we go to the Bada Mandir. So I went to Bada Mandir, and जब लंगर करके बेसमेंट से बाहर आ रहे थे, पैंट्री में से जो सेवादार आंटी है, she just came out and she asked me to come in for seva. Or this was my first time in the pantry, and I was always feeling I'm not doing it well, I'm not able to do it nicely. Plates at my counter were piling, where और मेरे दोनों तरफ फटाफट सबका चल रहा था. So I was feeling a little awkward. मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, but all the same I went on. करते गए गुरुजी का नाम लेकर के सब सेवादार गुरुजी के सत्संग करते हुए अपनी सेवा में लगे रहे, and so was I doing that. और जब 12 बज गए, 12 बजे के करीब, 12 बजे के बाद मुझे वो आंटी आई एंड शी सेज अब आप जा सकते हैं. So I came out of the pantry, and I saw सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे थे, and I too looked up. मुझे कुछ नहीं समझ आया. So my husband came and told me कि चांद में ओम के दर्शन हो रहे हैं, and I too was blessed with that sight. And that day, while going to the mandir, I had thought that I had shared with my husband that we will we'll try and stay in the mandir till late. 14th October is our wedding anniversary, so we wanted to be in the we wanted to begin our day in the mandir. So to which my husband then told me कि नहीं हो सकता, you know, इतनी देर तक रुकने नहीं देते हैं. But Guruji made it sure that we were in the mandir, and एक बार फिर जो मन में इच्छा थी उनके आशीर्वाद से उस नया साल शुरू करने की, that is exactly the way it happened. We began the day with his blessings, and गुरुजी की फ्रेग्रेंस के बारे में आप सबने सुना है. जब भी संगत को उसका आभास होता है तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता. I experienced it once at the railway station. We were standing at the railway station platform waiting for the train, and एकदम से गुरुजी की फ्रेग्रेंस में हम बिल्कुल भीग गए. And I looked around. There was nobody around. इतनी खूबसूरत फ्रेग्रेंस बहुत टाइम तक हमने एंजॉय करा.
and I began my journey with his blessings. Another time, गुरुजी के मंदिर में सेवा करते हुए I heard के this was sometime around 2011. I got to know के गुरुजी का आदेश हुआ है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सबने मंदिर में आना है. गुरुजी is going to shower his blessings on the Sangat. So when I heard this, I came and shared with my husband. We had got our tickets booked for a trip to Lakshadweep. So I told him, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी. Please, whatever you may do. We were traveling on the 30th of December. So I said, whatever you can do, please try, change the dates. He told me that this is not possible. So बैठ गए हम और अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मंदिर में जाकर गुरुजी के चरणों में माथा टेककर we started. And 31st December, we were at the Naval Officers Mess in Cochin. This mess is on the seashore. So, अभी पार्टी न्यू ईयर ईव की सेलिब्रेशन शुरू नहीं हुई थी ज्यादा. So dance floor पे कुछ ज्यादा लोग नहीं थे. My daughter and my husband, they ventured towards the dance floor. And थोड़ी देर में मुझे they called me up on my cell and said कि इस तरफ आप आ जाओ, come to the dance floor. So I moved towards the dance floor with the other children who had accompanied me. And nobody had to say a word. Again, there was such a strong fragrance. Nobody was around, not a person around कि किसी की परफ्यूम है या कुछ है, nothing at all. इतनी strong fragrance हमने पता नहीं कितनी देर खड़े रह करके वहां पे एंजॉय करी गुरुजी की ब्लेसिंग से. और जो मन में भाव था कि गुरुजी आपके मंदिर में आपके साथ नया साल शुरू करना है, वो मंदिर में नहीं हुआ, but wherever we were, he made it sure that we know that he is with us. So immense is his grace, so immense is his blessing. Aunty, can I go on or? Yeah, sure, Aunty. Right. So, Sangatji, I have one thing that comes to me very often now is that please अपने मन में जो जनरली हम लोगों के होता है, मैंने किया, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ ना ही हाथ. So whenever he has blessed us with an opportunity to be of help to somebody, rejoice in that grace that you have received, for he has chosen you to help, to be of some help to somebody. It is only his grace. हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, किसी के लिए क्या करेंगे. And गुरुजी के पास आने के बाद ये भी मेरे टीचर ने, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया है पहले, उन्हीं की मुझे सिखाई हुई एक बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी. That don't be judgmental, don't look around judging people, finding faults. If at all you want to do that, look within. अपने ही इतने पाप हैं, अपने ही इतने गुनाह हैं और अपनी ही इतनी कमियां हैं, उन्हें देखकर अपने आप को संवार लें ताकि उनकी मेहर में जो समय उन्होंने हमें दिया है उसे हर पल हम एंजॉय कर पाएं. गुरुजी के पास
आपने बहुत बार सुना होगा, ही वुड से कि जेड़े ज्यादा वेल ऑफ है या whatever we think financially very well to do, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, and the ones who are not financially doing so well, he goes out to them, he reaches out to them. I have experienced this. There's this lady who is working as a help, as a maid in my workplace. I saw her very disturbed. She had turned absolutely pale. So I just called out and spoke to her. She told me that her husband had had some problem, due to which his right hand was not working. हाथ नहीं उठा पाते थे, right hand बिल्कुल बेकार हो गया है. And पढ़ी लिखी नहीं है तो बता ही नहीं पा रही थी कि मेडिकली क्या प्रॉब्लम हुई है. बहुत परेशान थी, रोती रहती थी. सो मैंने उसको गुरुजी का पेंडेंट मेरे पास जो था, आई एम वेयरिंग वन, आई टोल्ड हर कि ये मेरे गुरुजी हैं, इनसे आप प्रार्थना करो, मैं आपको गुरुजी का स्वरूप ला के दूंगी, आप प्रार्थना करोगे? तो शी सेज हाँ मैं करूंगी. एंड देन आई वाज उसके साथ बहुत प्यार से जो गुरुजी का हुक्म था, आई शेयर्ड विद हर. एंड द नेक्स्ट डे आई टुक गुरुजी स्वरूप, उसको दिया, और within a couple of weeks I saw the smile back on her face. Medically everything was the same. He was taking medicines, बहुत टाइम से दवाई ले रहे थे, she had told me. But गुरुजी का स्वरूप गुरुजी के स्वरूप के सामने जब उस परिवार ने माथा टेका, कुछ दिनों में ही there was an absolute change, and till date that man, he is absolutely hale and hearty. उसका हाथ normally जैसे हमेशा काम करता था वैसे ही कर रहा है, and he is doing everything to fend for to earn a livelihood for his family. And जब भी वो मेरे को देखती है, इतने प्यारी स्माइल के साथ मेरे पास धीरे से आके बोलती है, जय गुरुजी मैम, और उसका भी मन खुश हो जाता है. और मेरे लिए भी इससे ब्यूटीफुल बिगिनिंग कोई हो नहीं सकती दिन की. He is there for each one of us. We have to have faith. To the ones who have just joined this bliss called Guruji's Sangat, please understand. जब मैं भी पहले ये बातें सुनती थी, मुझे टाइम लगा इसको एक्सेप्ट करने में, रियलाइज करने में, एंजॉय करने में. गुरुजी हर पल हर एक के साथ हैं, हर पल हमें अपने आशीर्वाद में रखे हैं. हमें विश्वास करना है, हमें अपने आप को उनके चरणों में बने रहने के योग्य बनाना है. वो तो हर पल हर किसी पर अपना प्यार निछावर करते हैं. One more satsang that I am reminded of, I'll share with you before I end it today. We had gone to Bara Mandir, and this one time my daughter also had accompanied us. हमारे साथ अंदर नहीं आए, दोनों बच्चे बाहर घूम रहे थे. छोटे थे तब, आई थिंक 12-13 साल के रहे होंगे. और मेरी बिटिया, शी वेंट अप टू वन ऑफ द यंग सेवादार्स एंड सेड, दीदी मुझे भी सेवा करनी है. टू विच ही वाज टोल्ड, आप जाकर के बैठ जाओ, बच्चे सेवा नहीं करते. सो she went off, and later when we came out she told me कि मम्मा, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप बारिश करा दो, बारिश हो जाएगी तो मुझे मेरी सेवा मिल जाएगी. And that is exactly what happened. A few minutes later there was a cloud. The cloud brought along showers, which lasted for not 2 or 3 minutes, she tells me, but enough
to wet that open area in the mandir, and Guruji blessed her with the seva that she had asked for. This is his grace. इतनी छोटी सी बात भी वो सुन लेते हैं, और हम बिना बात पे ही चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता, उसकी चिंता। वो प्रभु जिसने हम सबको जीवन दिया है, हर एक पल उनके हवाले है, हर एक पल उनके चरणों में, उनके प्यार में अपने आप को संवारते जाएं, निखारते जाएं। ये जीवन बहुत सुंदर है। जय गुरु जी की। Thank you so much for giving us this opportunity to be with you, to be with Guruji, to relive all those beautiful memories that we have had and we are every day receiving from him. हर एक पल उनको प्यार करके, उनको धन्यवाद करके हर एक पल जीवन जी लें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी।